Hi everyone, welcome back to the channel. So if you are planning for the MBA through GMAT, so with this video you will get to know the top 5 MBA colleges which accept the score of the GMAT for their admission process. Now coming to the first college is ISB Hyderabad. So ISB Hyderabad is one of the top business school in India and it offers the 1 year of MBA program and it accepts the GMAT score for their admission process. Especially if you are looking for the 1 year of MBA program, then this is the best college to consider with. यहाँ पे जो आपकी एडमिशन होगी इट विल बी बेस्ड ऑन योर GMAT स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक प्रोफाइल. If we consider the placements for this college, then this college is best for the consulting role. यहाँ पे जो admissions होते हैं those are more than 700 plus admissions, but यहाँ पे जो 30% candidates है those are of the consulting role only. And जो placements होते हैं उनमें 37% जो placements होते हैं वो consulting role के ही placement होते हैं. Rather than that, if you are interested in the leadership role also, then it is also best level. यहाँ पे जो placements होते हैं leadership role के लिए that is also best level. यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स आते हैं दे आर हैविंग द गुड प्रोफाइल, उनको वर्क एक्सपीरियंस भी होता है एंड दैट इज़ द रीज़न लीडरशिप रोल के लिए भी कंपनीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ प्लेसमेंट के लिए आती हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज यू कैन कंसिडर विथ इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स ऑल्सो. द एवरेज सैलरी पैकेज थ्रू दिस कॉलेज इज 34 lakhs per annum and the fees for the 1 year of MBA program is 41 lakhs. So in terms of return of investment, it is not that much good, but if we consider the fees of the IIMs, like if we consider the top IIMs like ABC, so उनका जो MBA होता है it is of 2 years और उनके 2 साल की MBA की जो फीस है इट इज़ 24 to 25 lakhs. बट हियर आपका जो MBA प्रोग्राम रहेगा वो 1 साल का ही MBA प्रोग्राम रहेगा. सो इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ ऑन अ हायर साइड, बट जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year यू हैव द चांस टू अर्न दैट मच मनी. सो in terms of return of investment it is not that much good, but you can save your 1 year and after 1 year only you have the chance to earn that much money whatever you have invested. If we talk about the recruitment, then यहाँ पे काफ़ी बड़ी कंपनीज आती हैं like Bain, BCG, D-Shaw and so many. Now coming to the second college is SPJ in Mumbai. So this is another good option you can consider with which accepts the score of the GMAT for their admission process. So it is the profile based college. Even if you are appearing for the CAT examination, then this is the one college you can consider with. Whenever you are preparing for the CAT or after whenever you are going to score good marks in the CAT, so you might be aiming to take the admission in one of the top business school like IIMs. But in case अगर आपको new IIM या baby IIM मिलता है, so this is the one college you can consider with over new IIMs and baby IIMs because of the 3 things. First is average salary package through this college is about 30 lakhs per annum. सेकेंड इज़ यहाँ पे जो कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट के लिए दे आर द टॉप कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, BCG एंड सो मेनी. एंड थर्ड इज़ गुड रोल्स एंड प्रोफाइल्स. यहाँ पे जो प्रोफाइल्स ऑफर की जाती है जिसमें कंसल्टिंग, FMCG, IT, ITES, ऑपरेशंस, एनालिटिक्स, कई सारे रोल्स ऑफर किए जाते हैं. इनफैक्ट फाइनेंस में भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी के भी रोल्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं. सो डेफिनेटली इट इज़ द बेस्ट कॉलेज इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल ऑल्सो. द फीस फॉर 2 years of MBA course through this college is 22 lakhs. The third college is MDI Gurgaon. So this is also one of the good college you can consider with which accepts the score of the GMAT for their admission process. Especially if you want to complete your MBA from marketing management, then this is the one college you can target with. इवन यहाँ पे जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसमें 5% वेटेज जो रहेगा ये आपके 10th के मार्क्स को, 5% वेटेज 12th के मार्क्स को एंड आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स को कुछ भी वेटेज नहीं होता है. मीन्स इफ़ यू हैव अ लो एकेडमिक्स देन दिस इज़ द वन कॉलेज यू कैन टारगेट विथ. यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम वेटेज रहेगा इट विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ योर GMAT स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर CAT एग्जामिनेशन स्कोर. The average salary package through this college is 26.07 lakhs per annum and the fees for the 2 years of MBA course is 25 lakhs. यहाँ पे जो मेजर रिक्रूटर्स आते हैं वो है लोरेल, गोदरेज, ITC जैसे बड़ी कंपनीज यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए विजिट करती हैं. Coming to the fourth college is IMT Ghaziabad.
So if we talk about the non-IIM colleges, then this is the one college which comes under the top 10 colleges in India. If you are looking for MBA in marketing, then this is the best option, that is IIMT Ghaziabad. So this college accepts the score of 3 entrance examination like your CAT examination, XAT examination and GMAT examination. On the basis of your entrance examination score and on the basis of your overall profile, you can get the admission in this college. The average salary package through this college is 15 lakhs per annum and the fees for the 2 years of course is 20 lakhs rupees. यहाँ पे BCG, Deloitte, Morgan Stanley जैसे कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं. Now coming to the fifth college is Goa Institute of Management. So Goa Institute of Management is another good option you can consider with through GMAT, especially if you want to complete your PGDM in General Management, then this is the best college which is known for the PGDM in General Management. यहाँ पे जो admissions होती हैं उनमें से 40% जो admissions होती हैं those are for the profile of General Management only. The average salary package through this college is 12 lakhs per annum and the fees for the 2 years of MBA course is 18 lakhs rupees. यहाँ पे Amazon, Deloitte, KPMG जैसी कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए विजिट करती हैं. So these are the top 5 MBA colleges which accept the score of the GMAT for their admission process. If you have any questions related to this or if you want to know any information related to any college, then you can just let me know in the comments. Thank you for watching the video. If you find the video helpful, then do like the video and subscribe the channel.